So hi guys, this video is on Power BI question. So if you are preparing for the Power BI PL-300 exam, so if you are preparing for PL-300 exam, this question is very important because it tests your understanding of dataset architecture, not just theory. So let's break down this real PL-300 type question step by step. So in this question, you have created a Power BI dataset and you need to create multiple reports. The question asks, what is the benefit of using a single Power BI dataset as a data source for multiple reports compared to each report having a separate dataset? So this is testing your knowledge of shared datasets, data modeling strategy, Power BI service management. So this question is basically, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपकी ये इन तीन चीज़ों पे नॉलेज जो है वो टेस्ट कर रहा है और वो तीन चीज़ें हैं. फर्स्ट इज़ शेयर डेटा सेट्स, सेकेंड इज़ डेटा मॉडलिंग स्ट्रैटेजी, and the third one is Power BI service management. Alright, so this is testing your knowledge of shared data set, data modeling strategy and Power BI service management. This question is not about report design, it's not about visuals. So this question is not about report design. ये question report design पे नहीं है. It's not about visuals. It's not about performance tuning. Alright, it's about efficient data management in the Power BI service. So this question is about this. Alright, the exam wants to know, do you understand centralized dataset architecture or not? So let's quickly analyze why the other answers are incorrect and which one is the correct one. So first is, it increases the number of schedule refreshes that can be configured for the Power BI dataset. कह रहा है कि इससे क्या होगा, जो स्केड्यूल रिफ्रेशेस होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे जो कि हमने पावर बीआई डेटा सेट के लिए कॉन्फ़िगर किए थे. अगर हम एक पावर बीआई डेटा सेट बनाते हैं मल्टीपल रिपोर्ट्स के लिए तो वो कह रहा है स्केड्यूल रिफ्रेशेस बढ़ जाएंगे, विच इज़ रॉन्ग. नो, इट एक्चुअली रिड्यूसेस रिफ्रेशेस बिकॉज यू ओनली रिफ्रेश वन डेटा सेट. जब आप एक ही पावर बीआई डेटा सेट बना रहे हो तो रिफ्रेशेस कैसे बढ़ेंगे, रिफ्रेशेस तो कम होंगे क्योंकि आपको सिर्फ एक सिंगल टाइम जो है वो रिफ्रेश करना है उसको. सो इट एक्चुअली रिड्यूसेस रिफ्रेशेस बिकॉज ओनली वन रिफ्रेश, सिर्फ एक बार ही रिफ्रेश करना है ना, मल्टीपल टाइम्स तो करेंगे नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. नेक्स्ट इज़, इट प्रिवेंट सेंसिटिव डेटा फ्रॉम बीइंग शेयर्ड विद रिपोर्ट. ये सेंसिटिव डेटा को शेयर करने से प्रिवेंट करेगा. सो सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन रोल्स एंड परमिशंस, नॉट सिंपली ऑन शेयर डेटा सेट. सिक्योरिटी जो है वो डिपेंड करती है रोल्स पे और परमिशंस पे. उसका इस शेयर डेटा सेट से
कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे. Next is it increases the speed of the reports and visuals connected to the Power BI dataset. So it increases the speed of reports. So speed depends on model optimization, not whether the data set is shared or not. Speed जो है वो depend करती है optimization पे, वो share data set पे नहीं depend करेगी. So these three are distractors very common in PL-300. And the next one is it reduces the number of data sets, refreshes and storage requirements in the Power BI service. So now this is correct. Data sets जो है नंबर ऑफ़ डेटा सेट्स कम हो जाएंगे, रिफ्रेशेस कम हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बार रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि हम सिंगल डेटा सेट यूज़ कर रहे हैं, और स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स भी कम हो जाएंगी पावर BI सर्विस में. So now the question is why, ऐसा क्यों होगा, right? So because when multiple reports connect to one shared data set, जब बहुत सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक ही डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगी, तो क्या होगा, ओनली वन डेटा सेट इज स्टोर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक डेटा सेट जो है वो यूज़ किया जाएगा, मल्टीपल डेटा सेट्स क्रिएट करने की नीड नहीं होगी. ओनली वन रिफ्रेश शेड्यूल इज़ कन्फिगर्ड, सिर्फ एक रिफ्रेश लगेगा यहाँ पे इस डेटा सोर्स पे. देन स्टोरेज कंजप्शन इज़ मिनिमाइज्ड, स्टोरेज कंजप्शन जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स जो है एक ही डेटा सोर्स को यूज़ कर रही हैं. देन मेंटेनेंस बिकम ईजियर, मेंटेनेंस बिकम ईजियर. देन नेक्स्ट इज डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल रिपोर्ट्स, डेटा जो है वो उन सभी रिपोर्ट्स पे कंसिस्टेंट रहेगा. डेटा रिमेन्स कंसिस्टेंट क्योंकि मल्टीपल डेटा सोर्सेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा किसी रिपोर्ट में अलग डेटा जा रहा है, किसी में अलग जा रहा है, सब में सेम जाएगा. ठीक है, दिस फॉलोज बेस्ट प्रैक्टिसेस. एंड इन PL-300 एग्ज़ाम, whenever you see questions about multiple reports using the same data, so you have to think of a shared data set. So if whenever there is a question like multiple reports using the same डेटा, जब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा कि मल्टीपल रिपोर्ट्स जो है वो सेम डेटा को यूज़ कर रही है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट शेयर डेटा सेट. शेयर डेटा सेट का कंसेप्ट होना चाहिए हमारे पास, सेंट्रलाइज्ड मॉडल, एंड रिड्यूस्ड मेंटेनेंस. मेंटेनेंस जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि एक ही डेटा सेट जो है वो मल्टीपल रिपोर्ट्स यूज़ कर रही है. सो एग्ज़ाम विल फोकस ऑन स्केलेबिलिटी, गवर्नेंस एंड एफिशिएंट रिसोर्स यूसेज, कि कितने एफिशिएंटली जो है वो हम यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को. एफिशिएंट रिसोर्स usage. So this PL-300 exam will focus on these three things. Okay, so remember this is for your PL-300 exam. For your PL-300 exam, one data set. So this is an important tip for this PL-300 exam, which is
one dataset, multiple reports, less storage, fewer refreshes, and better management. So whenever you go for this exam, just keep it in your mind. So that's how you think like a certified Power BI professionals. All right, thank you.